My question to you is, what should a marriage be based upon? Sorry? Mutual understanding. What's your name? Sorry? Mariam. Mutual understanding. There are some other powerful factors which you cannot rule out. And these powerful factors are beauty. It's really a powerful factor. Money, it's really a powerful factor. Caste, it's really a powerful factor. कैसे पता चले पहले कि वफादारी है कि नहीं? क्योंकि हमने तो यही देखा है कि 100 खुलूस बातों में, सब कर्म ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते खो गए सवालों में। तो कैसे पता चले कि कोई वफादार है या नहीं? ये तो राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। बेस तो बिल्कुल, बट हाउ वुड यू नो? हाउ वुड यू नो दैट समवन इज लॉयल और नॉट? देखिए, इन चीजों का तो पता चल जाता है ना कि समवन इज ब्यूटीफुल और नॉट, समवन इज रिच और नॉट, व्हाट्स द कास्ट ऑफ समवन, व्हाट टाइप ऑफ हाउस ही इज लिविंग इन, घर कैसा है जिसमें रह रहा है, जेवर कितना पहनाएगा आपको, जेवर कितना पहनाएगा आपको, वरी में सूट कितने और कैसे कैसे लेके आएगा, करता क्या है, दुबई च हुंदा है मुंडा या कराची हुंदा है? ये चीजें तो वो हैं जो विजिबल, ऑब्जर्वेबल है, लेकिन लॉयल्टी, लव, सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, these things are not likely to become observable. तो इनको कैसे परखें? तो फिर क्यों ना हम ब्यूटी को देख लें, दौलत को देख लें, इन्हीं बुनियादों पे। अच्छा, ये जो आपने कहा लॉयल्टी देखनी चाहिए, लव देखना चाहिए, क्या ये देखा जाता है आजकल? और सबसे बढ़कर अबव ऑल कैरेक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने भी जिक्र नहीं किया। अगर कैरेक्टर हाई है किसी का, तो हमने ये देखा है कि जब खातीन अपने भाई या बेटे के लिए किसी लड़की को देखने जाते हैं, या लड़की के वालिदैन, लड़की के वालिदैन सॉरी, खवातीन को किसी लड़की को देखने जाते हैं लड़के के वालिदैन, तो आके उनकी यही इंटरप्रिटेशन होती, कुड़ी सोनी है, बहुत ही प्यारी है, मुंह चेवे जिਵੇਂ जुबान ही कोई नहीं, यानी बेजुबान हो, खूबसूरत हो, तो एक खूबसूरत बुत चाहिए इन्हें, सही है ना? और जो लड़की वाले हैं वो क्या देखते हैं? मुंडा सोना सालड़ा दुबई च हुंदा है, वाले तो है नहीं, मां बुढ़ड़ी जाइए, भैना तिन्ना दी शादी हुई हुई है, कलम कला, होर की लेना है कुड़ी ने। इस सारी गुफ्तगू में कहीं पे आपने देखा कि उसके कैरेक्टर पे बात की गई हो? इसीलिए तो आजकल आप देखते होंगे, अल्लाह पाक रहम फरमाए,
There are so many cases of marriage failure. शादी के नाकामी के बहुत सारे केसेस सामने आते, सही है ना? तो देखिए, यही जानी चाहिए हम चाहिए, यानी किताबों में रहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखी जानी चाहिए, कैरेक्टर देखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एनीवेज, यही कुछ बताया गया है प्राइड एंड प्रेजुडिस में। प्राइड एंड प्रेजुडिस में यही कुछ बताया गया है। नाउ लेट मी स्टार्ट द नॉवेल। It's a Bennet family living in Netherfield. Bennet family. Bennet family living at Netherfield. Netherfield एक इलाका है। The Bennet family has 7 members. It's a 7-member family. Number 1, Mr. Bennet. Number 2, Mrs. Bennet. Okay? Now they have 5 daughters. The eldest of all is Jane Bennet. Jane Bennet. The next to Jane is Elizabeth Bennet. On number 3, there is Lydia Bennet. Lydia. नाम याद रखने हैं आपने। Lydia Bennet. Number 4, Kitty. And number 5, Mary. This is a Bennet family. It's a middle class family. It's a middle class family, so the girls are young ones. In the very opening of the novel, we see that Mr. Bennet and Mrs. Bennet have been married for the last 23 years. They have been married for the last 23 years. And the base of this marriage is beauty. Because Mrs. Bennet in her youth was a blooming flower. A red rose, an eye-catching piece of nature. But she was, according to the writer, she is the woman of little information and mean understanding. She is the woman of little understanding and mean information. The woman, Mrs. Bennet, is the woman of little understanding, little information and mean understanding. क्या मतलब इसका? Mean understanding क्या मतलब? बड़ी, जिसे कहते हैं ना, मोटे दिमाग की, अकल नाम की चीज नहीं थी जी। नहीं, कानों की नहीं, कच्ची, दिमाग की मोटी, अकल नाम की जिसमें चीज ना, उसे पता ही नहीं था कब कहां क्या कहना है, what to say, where to say, when to say. She didn't know. She was actually a vulgar woman. Okay? On the contrary, her husband was a sharp and witty and intelligent person. But he was an irresponsible father. अच्छा, अब ये एक बात जरा समझिएगा, which is very important to tell you all. देखिए, they are poles apart. In temperament, they are quite different from each other. Mr. Bennet and Mrs. Bennet. It really affected
the upbringing of the children. Do you see that that the parents having contrasted temperament, opposite temperament, cannot bring up their children in a proper way? तो वालिदैन की मिजाज में इख्तिलाफ बच्चों की नशोनुमा और अपब्रिंगिंग को तबाह कर देता है. इज इट राइट टू से? आप एग्री करते? डेफिनेटली. ओके. Now in the beginning of the novel, when novel opens, Mrs. Bennet seems very upset. Oh, how shameless person my husband is. कैसा बेशर्म है मेरा शौहर. उसे पता ही नहीं बेटियां बड़ी हो गई हैं. And he is to find out the suitable couples for them. जैसे सारी मदर्स को परेशानी हो जाती है ना, बच्चियां बड़ी हो तो उससे भी हो गई. बुलाती है, कहती, ओ यू सी इन आवर नेबरहुड अ यंग हैंडसम बॉय हैज स्टार्टेड लिविंग. ही हैज टेकन अ रेजिडेंस इन आवर नेबरहुड. ही इज मिस्टर बिंगले. व्हाट्स द नेम ऑफ द मैन? मिस्टर बिंगले. हमारे पड़ोस में एक नौजवान खूबसूरत अमीरजादा भी, उसने मकान लिया है, यहां रहना शुरू किया है. यू नो एट लीस्ट वन ऑफ आवर डॉटर्स कैन बी एंगेज टू हिम. ना उसके मोहल्ले वकू का पता, ना ये पता कि शायद वो पहले से एंगेज हो. At least one of our daughters can be engaged to him. You must go to him and invite him to tea. Okay, he says. All right. अच्छा, अब ये वजह क्या है, क्यों इतनी अपसेट है? What's the cause of her anxiety? What's the cause of her hurly-burly? क्यों इतनी उजलत में है? देखिए स्टूडेंट्स, देयर इज एन इंग्लिश लॉ. उस वक्त एक अंग्रेजी में, इंग्लैंड में एक कानून था कि अनमैरिड डॉटर्स कैन नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स. अनमैरिड डॉटर्स कैन नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स. ओके, समझ आई बात की? अनमैरिड डॉटर्स कैन नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स. वालिदैन की विरसे की मुस्तहिक नहीं होती जब तक लड़की के हाथ पीले नहीं हो जाते. आर यू गेटिंग? अगर लड़कियां सारी ही अनमैरिड हों और बाप की डेथ हो जाए, तो फिर बाप के जो भाई होते हैं ना, उनमें प्रॉपर्टी तकसीम होती है. ये मैकेनिज्म समझना है आप. अकॉर्डिंग टू लॉ, द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर इज डिवाइडेड अमंग द ब्रदर्स ऑफ देयर फादर. ये जी 18th सेंचुरी. It's a good question. You got the point? उनमें तकसीम हो जाती है. और अगर उसका कोई भाई भी ना हो, जैसा कि मिस्टर बेनेट का नहीं है, तो फिर उसके मेल कजन्स में तकसीम होती है. अब अगर ये इनके हाथ पीले नहीं होते और हाथों की पिलाहट इनके चेहरों पे आ जाती है और मिस्टर बेनेट की डेथ हो जाती है, तो फिर प्रॉपर्टी कहां जाएगी?
मिस्टर बेनेट के कजन्स के पास, मेल कजन्स के पास। अब क्या है, मिसेस बेनेट इज रियली अपसेट कि जो को थोड़ी बहुत जायदाद है, घर है या कोई एक दो दुकानें होंगी जो किराए पे दे दी होंगी, व्हाई इट शुड गो इन द हैंड्स ऑफ हिज कजन्स। अगर तो ये होता ना कि मिसेस बेनेट के भाइयों के पास जानी है, फिर तो कहना तो उसमें कोई बात नहीं, चंदा मामू दूर के बड़े पकाए बूर के। अगर चंदा है कुछ तो वो भी मामू ही है, चंदा चाचू नहीं हो सकते बेचारे, है ना। देखती हैं आप माओ के ट्रिक्स, द ट्रिक्स ऑफ मदर, हाउ दे प्रोपगेट द ब्यूटी ऑफ देयर ब्रदर्स। चंदा मामू दूर के बड़े पकाए बूर के, ऐसी 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 ऐसी, यस यस। आप जरा अपनी अम्मी के सामने कहिएगा कि अम्मी वो चंदा चाचू क्यों नहीं है, फिर वो जरा नताइज मुझे बताने हैं आके कि क्या निकले हैं। तो अब ये मिस्टर बिंगले, अब ये लॉ आपने याद रखना है, इट्स द रोल ऑफ मनी। मैंने आपको बताया ना, लव, मनी एंड मैरिज। ओके, मिस्टर बिंगले इज इनवाइटेड and Jane is a beautiful girl. Among all the Bennet sisters, Jane is the most beautiful one, and also to some extent she is a sensible girl. Mr. Bingley holds some talks to Miss Jane Bennet, and पहली मुलाकात ही कुछ ना कुछ जहनों में एक दूसरे के दिलों में जगह बना गई। पहली ही मुलाकात, तो क्या पहली ही मुलाकात इतनी इफेक्टिव हो जाती? You came, you saw and you conquered। पढ़ा हुआ है, you came, you saw, you conquered। आप आई, आपने देखा, आपने मुझ पर कब्जा कर लिया, मैं मकबूजा हो गया। मकबूजा कश्मीर में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहा। सही है, ओके ओके। अब ये मिसेस बेनेट बड़ी खुश है कि मुलाकात कामयाबी की तरफ गई। इसके बाद एक लोकल बॉल होता है, बॉल, BALL। A local ball is held at neither field। लोकल बॉल क्या होता है? What's लोकल बॉल? बॉल किसे कहते हैं? BALL बॉल, क्या गेंद को? ये गेंद वाला बॉल नहीं है जी। क्या जी? नहीं, गोला भी नहीं। बॉल इंग्लिश में महफिल रक्स को भी कहते हैं। ओके, अ डांस गैदरिंग। बॉल मीन्स अ डांस गैदरिंग, अ डांसिंग गेट टुगेदर। यू गॉट द पॉइंट। तो वहां पे एक नीदर फील्ड में एक बॉल होती है, एक महफिल रक्स होती है। And the style of that ball is that one of all the audience, one from the boy side and one from the girl side, come on the stage, they dance together and sing a song. हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, हम तुम। किसने किया मैं मेज हवा को, किसने किया मैं मेज हवा को, शायद उनका आंचल होगा,
रक्स में सारा जंगल होगा हम तुम। वसल की शब और इतनी काली, वसल की शब और इतनी काली, उन आंखों में काजल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा हम तुम। You got the point? So this was local ball. This was a local ball where the audience are dancing in the form of couples. Okay. Jane and Bingley danced together with the beat of heart and with the beat of drum. Now there is a very handsome and a very rich person sitting in that get together. इंतहाई अमीर और इंतहाई खूबसूरत लड़का एक वहां बैठा है. And he is very close friend of Darcy, very close friend of Mr. Bingley. Bingley का बड़ा गहरा दोस्त है. His name is Darcy. What's the name? Darcy. ये कैरेक्टर्स के नाम आपको सबके याद हो. His name is Darcy. अब एलिजाबेथ जो छोटी है जेन से, वो बैठी है चुप करके. एलिजाबेथ इज द मोस्ट सेंसिबल ऑफ ऑल बेनेट डॉटर्स. ये सबसे ज्यादा सेंसिबल है. अब ये सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बिंगले कहता है डार्सी, डांस विद दैट गर्ल, डांस विद दैट गर्ल. उसके साथ मिलकर डांस करो. किसके साथ? एलिजाबेथ के साथ, एलिजाबेथ बेनेट के साथ. एलिजाबेथ का वहां निकनेम बुलाया जाता है लीजी. व्हाट अ नेम? नॉट लीजी, लीजी. ओके. जवाबन डार्सी कहता है, शी इज टॉलरेबल but not handsome enough to tempt me. ठीक है, बाबा है, but not handsome enough to tempt me. इतनी भी खूबसूरत नहीं कि मैं पागल हो जाऊं इसके लिए. Now these remarks are overheard by Elizabeth. Overheard means दूर से सुनाई देना. Overhear होता है छुप के सुनना. आप बात कर रहे हैं तो कोई वहां पीछे बैठा सुन ले, इसे भी ओवर हियरिंग कहते हैं. ठीक है. कौन सुन लेता है ये अल्फाज? अब यहां से आप नॉवेल का टाइटल देखिए, प्राइड. प्राइड ऑन द साइड ऑफ डार्सी. और प्रेजुडिस होता है तासुब. किसी शख्स के बारे में तासुब इख्तियार कर लेना कि ये तो है ही बुरा. तो प्रेजुडिस ऑन द साइड ऑफ एलिजाबेथ, लीजी. सबको समझ आई ये बात कि व्हाट फॉर्म्स द टाइटल ऑफ द नॉवेल? प्राइड ऑफ डार्सी एंड प्रेजुडिस ऑफ एलिजाबेथ. बोथ दीज पैशंस विल गो साइड बाय साइड थ्रू आउट द नॉवेल. अच्छा, इसका पहले नाम होता था, इस नॉवेल का पहला जो टाइटल था वो था फर्स्ट इंप्रेशन. फर्स्ट इंप्रेशन. बाद में राइटर ने खुद चेंज कर दिया, प्राइड एंड प्रेजुडिस नाम रख दिया. तो बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे.